Assalamu alaikum viewers. Let me introduce myself first. My name is Ayaz H Mashori and I qualified CSS 2011 and I qualified PCS thrice, and currently I am working as a PMS Officer in Sindh government. And let me tell you about my coaching experience that I have been teaching CSS and PCS aspirants since 2010. And I have been teaching different subjects like English essay and reading comprehension in English press and composition paper, Islamic art in compulsory subjects, and sociology and Sindhi literature in optional subjects. So today I have come up with an idea that why not to discuss about Islamic art, because I thought that many people, if they fail in any subject other than English essay and Persian composition, that is Islamic art. So we have to understand why people fail in this paper. Why people fail in Islamic art, which they have been reading since their childhood. So what makes them fail in this subject? So I will be making short videos for your guidance, and in which I will be guiding you from different aspects of Islamic art. So the very first aspect we are going to discuss in today's video is regarding understanding the nature of Islamic art. This is very crucial, this is very important, because to me, many of the candidates fail to understand the nature of this subject. Let me tell you how. See, as it is very famous, it is very known to all the candidates, to all the aspirants of CSS, that Islam is a complete code of life. So, Islamic is a complete study of life. As Islam deals with every aspect of life, whether it is cultural, social, economical, or political. So does the subject of Islam deals with every aspect of life. So if we fail to understand the basic terminologies, basic jargons of these different fields, of these different subjects, then we will fail to deliver good in Islam. Let me tell you how. Let me put examples in this regard. See, Islam deals with different similar topics. Like there is a chapter Islamic culture and civilization. I think it is the third chapter in your new syllabus. So Islamic culture and civilization. For this chapter, if you will directly study from any Islamic book that what Islam says about Islamic culture and civilization, then you may fail to understand the very nature of this chapter. Why? Because culture and civilization are the basic topics of the field sociology. Sociology is the scientific study of society. So if you don't know what culture is, if you don't know what civilization is, if you don't know what is the difference between these two terms, you will fail to deliver in this chapter. So you need to understand the basic terminologies of sociology to solve the questions related to this chapter. I don't mean that you have to study complete sociology to solve the Islamic paper, but you need to know the basic terminologies for this. Right? So Islamic culture and civilization can only be solved when you know what are the basic elements of culture, what are the basic elements of civilization. Like if there comes a question that Islamic culture does not necessarily mean Muslim culture, then what you will write? Here you want to make difference between Islamic culture and Muslim culture, and that is only possible when you know the basics of sociology. Right? Let me tell you another example in this regard. See, there comes a chapter in Islam regarding life of Holy Prophet, or another chapter regarding public administration in Islam. And for this, you need to know basic history, Islamic history. So this is not only the paper of Islamic, but it is also the paper of Islamic history. Not complete Islamic history, but a smaller part of Islamic history. For example, the second chapter is regarding the life of Holy Prophet with particular aspects. Like Holy Prophet as a diplomat, Holy Prophet as an educationist, as a peacemaker. So for this, you does not need only references from Quran. You need references from history, from the events that occurred at that time, right? So हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ख्याल करना है कि हमने थोड़ा हिस्ट्री में से भी लेके आना है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री का पार्ट है. या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें इन इस्लाम, तो देयर कम्स अ टॉपिक के भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पायस कैलिफेट. सो फॉर दिस आपको क्या करना है कि पायस कैलिफेट के पार्ट में से भी कुछ आपको इवेंट्स लेके आने हैं.
राइट। तो थोड़ा सा हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री भी हमें मालूम होनी चाहिए इस्लामियात को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। छोटा सा और एक मिसाल देता हूँ, देखें ह्यूमन राइट्स चैप्टर है, राइट, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। सो एक सवाल आता है कि इस्लाम इज द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम हमारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली दे मेंशन all the references regarding human rights in Islam. So the question does not only means कि what are the human rights in Islam. The question is Islam is the champion of human rights. And champion वो होता है जो रेस में पहले होता है, समझ लें। तो रेस में जो पहले होता है तो दूसरा और तीसरा भी होता है, राइट। तो when this question comes you are supposed to have a comparative analysis कि भाई ह्यूमन राइट्स वेस्टर्न हेमीस्फीयर में कहाँ थे, दूसरे मज़ाहिब में कब मिले गए, तो और दूसरे मज़ाहिब में उनकी नेचर क्या है, इस्लाम में उसकी नेचर क्या है, उसका स्टार्ट पहले वहाँ हुआ या यहाँ हुआ, तो इन चीज़ों पे भी आपको लिखना होगा। तो यू नीड बेसिक वर्ड हिस्ट्री, लाइक मैग्ना कार्टा का थोड़ा पता होना चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वार्स एंड इंसेप्शन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, राइट। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। एक और मिसाल देता हूँ, सवाल आता है कि कंपेयर बिटवीन, या ऐसे आता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस्ट अमंग ऑल इकोनॉमिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, कमेंट आर डिस्कस। भाई सिर्फ इस्लाम के प्योरली इकोनॉमिक सिस्टम पे नहीं लिखना, ये कंपैरेटिव क्वेश्चन है। आपको फिर कैपिटलिज्म पे भी लिखना पड़ेगा, सोशलिज्म पे भी लिखना पड़ेगा, राइट, कि भाई सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं या इकोनॉमिक उनके जो मॉडल्स हैं वो फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, राइट, उनकी पॉजिटिव्स हैं तो कौन सी हैं, और इस्लाम की कौन सी पॉजिटिव्स हैं जो उनसे ज़्यादा हैं, राइट। तो यू नीड एटलीस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं, ठीक है, और ये रिबा क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक और मिसाल दे देता हूँ कि भाई इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, राइट, एंड कंपेरिजन विथ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तो पहले तो आपको थोड़े पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक टर्म्स होते हैं, लाइक मैं आपको बता दूं कि स्टेट क्या होती है, स्टेट के पिलर्स कौन से होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सॉवरेंटी का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ होता क्या है, रोल ऑफ स्टेट क्या होता है। जब ये नहीं पता होगा तो जाहिर बात है हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो टू सॉल्व इस्लामियात इन अ गुड वे इज टू नो इट्स नेचर। और नेचर को मैंने आपको लिए बता दिया, आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, नो नीड टू बी स्केयर्ड। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज अ कंप्लीट स्टडी ऑफ लाइफ, एंड फॉर दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डील्स विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो उन सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें मालूम होने चाहिए। So thank you very much. This is very first video in this regard, and I will come up with another video regarding Islam. Thank you very much.